Good morning, students. My name is Hemalata and today we are going to revise the sexual reproduction in humans. This is the chapter 3, learning outcomes and goals. Student will be able to describe events of human reproduction, describe male and female reproductive system, illustrate the structure of male and female reproductive system, illustrate the process of ovulation, explain fertilization. So we will be doing them in two videos. So firstly, today we are going to do till the process of ovulation, and then we will be taking fertilization, spermatogenesis, oogenesis, label the structure of sperm and ova, explain, understand about menstrual cycle, this is the function of testes and ovaries, explain the role of progesterone, testosterone, explain embryonic development, and describe parturition and lactation in humans. So now we are going to understand the chapter. So we have the screen with us, the reproductive events, gametogenesis, insemination, fertilization, implantation, gestation, and parturition. These are the events which take happens in the reproductive events in the humans. Parts of male reproductive system, reproductive tract of the human male contain, it is located in the pelvis. It is pelvis region is lower the abdomen. Then the male reproductive system includes a pair of testes, accessory ducts, accessory glands, external genitalia. The figure is of NCRT. You have to learn this figure, which is having ureter, then seminal vesicle, urinary bladder, vas deferens, prostate gland, penis,
urethra, glans penis, and foreskin, testes, scrotum, bulbourethral gland, and then the anus, rectum, ejaculatory duct. Male reproductive system, it consists of urinary bladder, ureter, seminal vesicle, prostate gland, lobule, testicular lobules, epididymis, urethra, sperms, which are produced in the testes. Bladder, pubic bone, urethra, testes, glands, penis, seminal vesicle, prostate, bulbourethral gland, pars deferens, epididymis. Structure of testes. Paired male gonads producing the sperm hormones. They are oval in shape, length 4 to 5 centimeter, width 2 to 3 centimeter, situated outside of the abdominal cavity within a pouch called scrotum. Scrotum low temperature of testes 2 to 2.5 degrees Celsius, lower than the body temperature. Spermatogenesis. Testes is covered by a dense covering capsule, tunica albuginea. In each testis, 250 compartments called testicular lobules are there. Each lobule contains 1 to 3 convoluted coiled seminiferous tubules. यहाँ पर आप डायग्राम भी देख रहे हो, उस डायग्राम में आपको पता चल रहा है कि टेस्टिस के अंदर किस तरह से लॉक्यूल्स हैं, बहुत सारे टेस्टिकुलर लॉक्यूल, और उनके अंदर 1 से 3 तक हाईली कॉइल्ड सेमिनल वेसिकल्स हैं। टेस्टिस कवर्ड है कैप्सूल से, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के कैप्सूल से, ये आपको दिख रहा है। एंड ट्यूनिका वेजिनालिस के अंदर 2 लेयर्स हैं, पैराइटल लेयर एंड वेस्ट्रल लेयर। सेमिनल ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर पैक्ड हो रहे हैं, आपको दिख रहा है। यहाँ पर छोटी सी छोटी ट्यूब्स हैं जो कि यहाँ पर कॉइल्ड हो रही हैं, हाईली कॉइल्ड। इनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का है, और इनके अंदर ही टेस्टिस के से स्पर्म बनते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इनके अंदर ही होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। देन यहाँ पर आप देख रहे हो इनके इफ्रेंट डक्ट्स हैं। हर सेमिनी इफ्रेंट डक्ट्स किसके हैं? रेटिटेस्टिस के। पहले रेटिटेस्टिस बनी है। ये सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एक एनास्टोमोसिस, एक इंटरमिंगल्ड नेटवर्क बना है ट्यूब्स का, जिसे रेटिटेस्टिस बोला गया है। मीडियास्टिनम में बनता है सेंटर में टेस्टिस के। देन उससे इफ्रेंट डक्ट्स अराइज होते हैं रेटिटेस्टिस से, और वो पूरे पूरे इफ्रेंट डक्ट हेड ऑफ द एपिडाइडमिस में जाकर एंटर होते हैं, और वो हेड ऑफ द एपिडाइडमिस देन बॉडी ऑफ द एपिडाइडमिस में प्रोजेक्ट करता है, एंड देन टेल ऑफ द एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस के टेल में प्रोजेक्ट करता है। एंड देन द स्पर्म्स मूव फॉरवर्ड, स्पर्म्स फॉरवर्ड मूव करते हैं डक्टस डिफरेंसेस से ऊपर, वास डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं, डक्टस डिफरेंसेस से स्पर्म ऊपर मूव करते हैं। तो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। आपको यहाँ पर डायग्राम में इमेज दिख रही है। ओरिजिनली अंदर अगर कट सेक्शन देखा जाएगा तो इस तरह से दिखेंगे, एंड अगर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कट करके देखा जाएगा तो इट विल बी लुकिंग लाइक दिस, जहाँ पर स्पर्म बनते हुए आपको सेंटर में ल्यूमेन में दिखाई दे रहे हैं। ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज हैविंग द स्पर्म्स। स्पर्म सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन बाहर से कवर कर रही है एपिथेलियम को, टेस्टिस के एपिथेलियम को, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के एपिथेलियम को। एंड देन इसमें हम देखेंगे कि दे आर लाइंड इन बाय इनसाइड बाय द 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात हो रही है बिकॉज यहाँ पर स्पर्म बनते हैं। मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस डिवीजन यहाँ पर होती है। स्पर्मेटोगोनिया में मदर सेल्स में स्पर्म बनते हैं। सर्टोली सेल सपोर्टिंग सेल्स हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को।
Regions outside the seminiferous tubules called interstitial space. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है, जिसमें छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स लेडिक सेल्स होते हैं। लेडिक सेल्स सिंथेसाइज करते हैं, सिक्रीट करते हैं मेल हॉर्मोन्स को, एंड्रोजन्स को, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। ये आपका एनसीईआरटी का इमेज है। इसमें आपको दिख रहा है आउटर मोस्ट लेयर पे सबसे पहली लेयर जो सेल्स की रखी हुई है, दैट आर स्पर्मेटोगोनियम। ये मदर सेल्स हैं। बीच बीच में यहाँ पर नर्स सेल्स, सर्टोली सेल्स हैं। मदर सेल्स ने अपने अंदर मियोसिस किया तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाए, और उन्होंने सेकेंड मियोसिस किया तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, जो यहाँ पर बाहर की तरफ दिख रहे हैं। सर्टोली सेल्स के आसपास स्पर्मेटिड्स इमेच्योर स्पर्म होते हैं, जिनमें अभी पूरी की डिफ्रेंसिएशन नहीं हुई, और जब उनमें डिफ्रेंसिएशन होती है तो वो स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। इनसाइड टू आउटसाइड आपको ऐसे ही याद रखना है। स्पर्मेटोगोनियम, सर्टोली सेल्स, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatids, and spermatozoa. This is the order which you have to learn the image and make it and learn it. Accessory ducts. Vas different receives the duct seminal vesicle, opens into urethra as ejaculatory duct. बास डिफरेंस के अंदर सेमिनल वेसिकल का भी डक्ट आ जाता है, और ये यूरिथ्रा में ओपन हो जाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बन जाता है। फंक्शन स्टोर्स एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू यूरिथ्रा। इनका फंक्शन होता है कि ये स्टोर भी करते हैं स्पर्म को, ट्रांसपोर्ट भी करते हैं स्पर्म को टेस्टिस से यूरिथ्रा के अंदर। यूरिथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर and extend through the penis to external opening. यूरिथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है और पेनिस के अंदर आता है टू एक्सटर्नल ओपनिंग। यूरिथ्रल मीटस। एक्सेसरी ग्लैंड्स और ऑर्गन क्या है? सेमिनल वेसिकल जो है वो एक वास डिफरेंस के अंदर एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करते हैं, जो न्यूट्रलाइज करता है एसिड का वजाइना में। इट सिक्रीट फ्रक्टोज। फ्रक्टोज रिलीज करते हैं विच प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द स्पर्म। इट ऑल्सो सिक्रीट प्रोस्टाग्लैंडिन्स विच इंक्रीज स्पर्म viability and stimulate female uterine contraction that help in sperm move into the uterus. It contributes about 40 to 50% of total ejaculate. The accessory glands, function of the prostate gland, it secrete a thin milky alkaline fluid that helps sperm viability. The fluid helps to neutralize the acidity or of the other seminal fluid. This helps to enhance sperm viability. The total secretion of prostate accounts for about 20 to 30% of total ejaculation. Assist in the first stage of male orgasm. Bulbourethral gland, location inferior to the prostate gland, appearance tiny pea size. In function, secrete a clear, thick alkaline mucus to neutralize acid in the urine, in the urethra. Female reproductive system. The female reproductive system is located in the pelvic region. It includes pair of ovaries, pair of oviduct, uterus, cervix, vagina, external genitalia. These are the parts of the human female reproductive system. Oviducts, uterus, vagina, accessory ducts है. Pair of mammary gland, nourishment of the offspring के लिए, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स हैं। मेमरी ग्लैंड जो मिल्क प्रोड्यूस करने और फीड करने के काम आता है यंग वन को। All parts are integrated structurally and functionally to support the processes of evolution. सारे स्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड हैं, फंक्शनैलिटी भी इनकी इंटीग्रेटेड है, ताकि ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड का सारा रोल प्ले कर सके। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Female gonads, ovaries. Ovaries are the female reproductive sex organs that produce female gametes, ovum. It also produces several female steroid hormone, estrogen and progesterone. Ovary is located in the lower abdomen. Each ovary is about 2 to 4 centimeters in length.
These are connected to pelvic wall and the uterus by ligaments. Each ovary is covered by thin epithelium which enclosed ovarian stroma. At the peripheral cortex, follicles present, and in medulla, blood vessels and ovary ligaments are present. Mammary glands. Paired glandular मेमोरी ग्लैंड पेयर में है और इनमें बहुत फैट होता है. ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड होते हैं 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल्स में, जिनके क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाइज. एल्वियोलाइज मिल्क सिक्रीट करती हैं ल्यूमन ऑफ एल्वियोलाई में. ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब join in memory duct. Many ducts join to form memory ampulla, which is connected lactiferous duct through which milk is sucked out. Paired glandular tissue, variable amount of fat. Glandular tissue divided into 15 to 20 mammary lobules containing cluster of cells called alveoli. Alveoli secrete milk stored in lumen alveoli. Tubules of each lobe join in the mammary duct. Many ducts join to form mammary ampulla, which is connected to lactiferous duct. Gametogenesis. This process and oogenesis. The spermatogenesis is the formation of the sperm. Oogenesis is the formation of ovum. Spermatogenesis is a process formation of spermatids that involve the substages. Multiplication phase, spermatogonia undergo repeated mitotic divisions and form large number of diploid spermatogonia cells. In this, then second phase is growth phase. Spermatogonial cells grow in size. By increasing the cytoplasm matures to form primary spermatocytes. Maturation phase, the diploid primary spermatocyte undergo first meiosis, resulting in the formation of two equal haploid cells called secondary spermatocytes. 23 chromosomes इनमें होते हैं. Undergo second meiotic division to form four equal haploid spermatids. Spermiogenesis. Inactive non-motile spermatids are transformed into active motile spermatozoa. After spermiogenesis, sperm heads are embedded in Sertoli cells to release from the seminiferous tubules. Spermiation. oogenesis के स्टेप्स आपको दिखा रखे हैं. सबसे पहले यहाँ प्राइमरी फॉलिकल्स आप ओवरी में देख रहे हैं जो डीजनरेट हो रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर. कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता हुआ दिख रहा है आपको, पर हम 1 then 2 then 3 ऐसे आएंगे. प्राइमरी फॉलिकल्स आप कुछ स्मॉल साइज फॉलिकल दिख रहे हैं. Then they convert into growing follicles, and then growing follicles will convert into antral follicle. Antral follicle got ruptured, and then ova is released. Corpus luteum is formed after the remaining mass of the ruptured follicle, and degenerated corpus luteum is there. So this is the oogenesis and this ovarian events, and in that primordial germ cell is in the primary follicles. It is the oogonium. Oogonium matures into grow into primary spermatocyte. Primary spermatocyte do meiosis 1, result into secondary spermatocyte and one polar body. Secondary spermatocyte also do meiosis 2, resulting in the ovum and the second polar body. Structure of ova is like this. It is covered by the membrane, ova membrane. It is having a perivitelline space. Then there are the cells of the zona pellucida, and then there after the zona pellucida there is cells of corona radiata, and nucleus is there inside the ovum. Nucleus is there inside the ovum, then cytoplasm, then ovum membranes, perivitelline membranes, and then corona radiata.
Oogenesis, primary oocyte prophase 1 of meiotic division at birth, many millions. Primary oocytes are arrested in the prophase 1 of the meiotic division at the birth in the fetal stage. Primary follicle, primary oocyte cells, and granulosa cells. Many follicle degrade from birth to puberty. 60,000 to 80,000 are remaining in the ovary. Secondary follicle, tertiary follicles, secondary follicle fluid filled cavity antrum, thecal layers, theca interna, theca externa. Theca layers are theca interna 10 to 15 layers of follicle cell membrane granulosa. Primary oocyte 2N within the follicle size increases and first meiotic division unequal large haploid secondary oocyte and the first polar body is formed. Secondary oocyte retain the nutrients, reach the cytoplasm of the primary oocyte. Tertiary follicle, tertiary follicle into Graafian follicle, secondary oocyte ovum, zona pellucida membrane. Graafian follicle rupture and release the ovum. सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ही ओवम रिलीज हो जाता है ग्राफिन फॉलिकल से and when the sperm will come then only the secondary oocyte will complete its meiosis second and then only the egg will be formed finally. So today we are going to understand till here, and in the next video we are going to proceed the lesson. So I hope you have understood the basics of the human practice system. Thank you.